Hello students, how are you all? Today we will start the topic biological nitrogen fixation of the chapter Mineral and Nutrition, class 11th biology. Okay, before this we had already discussed the nitrogen cycle. So we know that what is nitrogen fixation means the converting the free nitrogen which is present in air into ammonia, then nitrite and then into nitrate. Okay, so this whole cycle, or you can say in whole step, the first stable product which formed is ammonia. Okay, so today we will basically focus on this. Clear? And before this I would like to clear your concept, or I will like to mitigate your confusion between this nitrogen fixation as well as in this ammonification. Actually, what happened in case of ammonification, the biomass will decompose and form ammonia. Here the product is also ammonia, but because of decomposition, okay, means it is a breakdown process. In case of nitrogen fixation, ammonia is formed, the first stable product is ammonia, but by the process of synthesis, okay, and that is known as, or you can say by process of chemical reaction, and this step is known as nitrogen fixation, or will come under the nitrogen fixation. Okay, in our previous class we had already discussed about the nitrifying bacteria. Okay, means those bacteria which form nitrite to nitrate. Okay, today we will basically focus on biological nitrogen fixation and from nitrogen to ammonia. Clear? Now, biological nitrogen fixation, what is this? When the nitrogen fixation takes place with the help of living organism, okay, then it is known as biological nitrogen fixation. But if you observe, then you will find that this living organism, usually it is prokaryotes, means these are microorganism. Okay, why? Because they have an enzyme, that is nitrogenase. This enzyme facilitates the fixation of nitrogen. Okay, this enzyme causes nitrogen fixation. Let's see what is this nitrogenase enzyme. There are 2 points which you must learn and keep in mind. First, this nitrogenase is molybdenum iron protein molecule. Clear? Second, this nitrogenase will be active only in absence of oxygen, means it will work only in anaerobic condition. Then let's discuss the microorganism which involved in this nitrogen fixation. And I would like to, if any students will have question related with this microorganism, then it will be really very good. So there is a one very good question, so I just want कि आपके दिमाग में वो question आए जब मैं इस point को discuss कर रही हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया, nitrogenase will be active only in absence of oxygen. Now let's discuss the microorganism. This microorganism which involve in the biological nitrogen fixation, we can divide in 2 categories. Those who are free living microorganism and those which show the symbiotic relationship. Okay, this free living can be, again we can classify again in 3 categories: aerobic, anaerobic, having both, or we can say mutualistic condition, I should say, aerobic, anaerobic and mutualistic condition. Okay. Okay, aerobic bacteria, you can get some example like Agitobacter, Bergerincia. Okay, in anaerobic means absence of oxygen, those bacteria which live in anaerobic condition like Rhodospirillum. When we talk about the Bacillus, it shows the mutualistic habitat. Okay,
Then there are some cyanobacteria also like Anabina, Nostoc. Okay, so it was about the free living bacteria. Okay, now next, symbiotic. Some bacteria shows the symbiotic relationship with leguminous plant. Some bacteria shows symbiotic relationship non-leguminous plant. Okay, in the non-living, the best example is Frankia as a bacteria which show the symbiotic relationship with the Elnis. Elnis, it is a plant and it is non-leguminous plant. So Elnis with Frankia. Now come to the leguminous plant. Rhizobium, the most common and best example. Okay, Rhizobium shows the relationship, symbiotic relationship with leguminous plant. Leguminous plant like alfalfa, sweet clover, you will say beans, all the sweet peas and lentils, etc. Okay, you will get so many examples. Now क्वेश्चन क्या था आपके दिमाग में? क्या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया? आना चाहिए था. क्वेश्चन ये था, मैंने पहले ही बताया था, नाइट्रोजिनेज विल बी एक्टिव ओनली इन एनारोबिक कंडीशन. लेकिन मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है, कुछ एरोबिक बैक्टीरियाज का भी एग्जाम्पल दिया है. तो वो कैसे नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एक्चुअली दोज बैक्टीरिया विच आर एनारोबिक व्हेन दे फिक्स नाइट्रोजन, जब वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं तो उस टाइम के लिए ये कंडीशन कैसे क्रिएट कर लेते हैं या उस पर्टिकुलर पार्ट में ये कैसी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, एनारोबिक सिचुएशन, और तब नाइट्रोजिनेज एक्टिव होकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. ठीक, और हम ये देख रहे हैं कि हमारा मेन फोकस डिस्कशन में और आपकी बुक में क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद राइजोबियम. हम फ्री लिविंग को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसका जो पार्टिसिपेशन है या टर्नओवर है, कह सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का, बहुत कम है. इसको कंट्रीब्यूशन कम है क्योंकि इसे स्पेशली वो सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी. बट अबाउट द राइजोबियम विच आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस, इट इज़ हैविंग दैट सिचुएशन ऑलरेडी. ठीक, तो अब आ जाते हैं राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट के रिलेशनशिप पे, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. ठीक है, वी हैव टू सी द रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट इन दिस लेग्यूमिनस प्लांट. और हमें कैसे मिलेगा? व्हेन दिस plant is just before the flowering, we can uproot the plant, then we will find the roots having nodule like structure. Okay, this is known as root nodules. और यहीं पे क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा. सो वी विल जस्ट कट इट और हम देखेंगे सेंटर में सर्कुलर जो सेंटर पार्ट है दैट इज पिंक इन कलर. क्यों पिंक है? बिकॉज इट इज हैविंग अ पिगमेंट दैट इज नोन एज लेग hemoglobin या leguminous hemoglobin. What is the function of this leg hemoglobin? This leguminous hemoglobin acts as a oxygen scavenger. Means ये ऐसा environment create करेगा कि ऑक्सीजन को बाहर कर दे. This it will create a system which is non-oxygenic. Okay, means यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा. Clear? क्यों? ये सारी सिचुएशन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इज रिड्यूस, नाइट्रोजन इज गोइंग टू रिड्यूस इनटू अमोनिया. ऑक्सीजन होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना? हमें तो रिडक्शन करना है ना, और तभी नाइट्रोजिनेज एक्टिव होगा. तो लेग हीमोग्लोबिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी को कंटिन्यू करते हुए, दैट इज नोड्यूल फॉर्मेशन. और नोड्यूल फॉर्मेशन समझने के लिए आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है 203 पेज नंबर पे जो पिक्चर दी हुई है, इट इज़ अ बेस्ट पिक्चर. Okay, and the steps are already mentioned here. We'll discuss it one by one. So picture is with you. What happening here actually? In the first step, root hairs present in soil will come into contact with bacteria, rhizobium bacteria. This rhizobium bacteria will colonize here, and the epidermal cell root hair will get in contact with that and it will get curl. ये कैसे हो जाएंगी? कर्ल हो जाएंगी. ठीक है ना? You can see the picture. और इसमें means अब ये क्या करेंगी? compatible होगा इन्फेक्शन के लिए. then the bacteria will enter in this bacterial thread, पूरी एंटर कर जाएगी और कहाँ तक पहुँचेगी? कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल तक. ठीक, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप. फर्स्ट में कॉन्टैक्ट में आया,
सेकेंड स्टेप में इंटर कर गया और ये कहाँ तक पहुँचा, ये पहुँचा पेरिसाइकिल तक, कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल रीजन तक। और यहाँ पर इस बैक्टीरिया ने जो सेल्स हैं, कॉर्टिकल सेल्स और जो पेरिसाइकिल सेल्स जो हैं, इनको स्टिमुलेट किया एंड इट विल स्टार्ट डिवीज़न, और ये फटाफट ग्रो करना शुरू कर दिया और सेल डिवीज़न शुरू हो गया। यहाँ पर सेल डिवीज़न हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक मास सेल का क्रिएट हो जाएगा, क्लियर, एंड दैट इज नोन एज नोड्यूल, ठीक है। देन दिस नोड्यूल विल गेट मेच्योर, this bacteria will release from this and this nodule will start formation of, with the help of this bacteria, it will start formation of ammonia, means it will start trapping the free nitrogen into you will say ammonia, clear। तो ये हो गई पूरी प्रोसेस आपकी, ठीक। अब जो एक और you can see the chemical reaction here where the nitrogen is going to fix into the first stable product, that is ammonia, and for in the reaction for 2 ammonia there is 16 ATP required, okay, and means 8 ATP per ammonia molecule is required here. It is much more energy required process, energy needed process, but from where this energy comes, this energy comes from the respiration of the host plant। मतलब बैक्टीरिया का एनर्जी देने में कोई रोल नहीं है, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, होस्ट प्लांट से आ रही है। बैक्टीरिया का काम क्या है, केवल इट विल प्रोवाइड द नाइट्रोजनेज एंजाइम with the help of leg hemoglobin which is going to create the anoxygenic condition. This nitrogenase will fix the free nitrogen from air into the ammonia, okay। Then the further process will done and it will convert into nitrite and nitrate, which we have discussed already, okay। and this अगर नाइट्रेट में जा रहा था और अगर ये अमोनिया में है, this ammonia can also be accumulated by the plant, but as we know that this ammonium is very toxic, so then it will be, so just to minimize its effect, it will be, so ammonia will be assimilated as an ammonium NH4 plus, but as I have told you that it is very toxic, so to its accumulation is not possible, it can't be accumulated as it is, so it will be converted into glutamate। कैसे glutamate में convert होगी, it go in reductive amination, okay। तो अब इसमें क्या होगा कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से ये NADPH की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगी एंड इट विल फॉर्म द ग्लूटामेट। नाउ इट इज़ नॉट टॉक्सिक एंड द सेकेंड स्टेप, सेकेंड वे इट कैन ऑल्सो गो इन द ट्रांसएमिनेशन। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस, जस्ट सी दिस वीडियो ट्वाइस और थ्राइस and then read the topic. Every concept will be fixed and you will understand this topic very easily. Thank you very much, students.